Okay, again. So we are doing ratio and proportions, and I hope the questions which we have done till now are clear to everyone. So the next question that we have to do is in front of you. Divide a line segment of 45 centimeter into three parts whose ratio is 5:7:3. Okay, so let's do it. कैसे करना है? और first visualize this problem. What is this problem? Okay, so there is a line. Suppose, uh, so first we have to understand the question. क्या है? There is a line. ठीक है. Suppose this is your line. This line has been divided into three equal parts. Three parts. ठीक है, not equal. Three parts. अब वो three parts कौन कौन से हैं? First is your this. Suppose this is your A, and this is your B, and this is your C. And these A, B, C are in a ratio A, ratio B, ratio C are in a ratio 5, ratio 7, ratio 3. Now we have to find out the length. ठीक है कि 45 ये total length is your 45. Total length is your 45 centimeter. So what should be the length of each part? Let's say A, B and C. ठीक है. So जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, what we have to find out कि we know these all ratios. अगर हम sum करते हैं, let's take it like this. If I add 5 plus 7 plus 3, it's 15. It's not 45, है ना? 45 के बराबर ये नहीं है. क्यों नहीं हो रहा? Because इसका एक कोई इक्विवेलेंट रेशियो होगा. इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या है? इसमें कोई एक हिडन फैक्टर है जो इन तीनों रेशियो में कॉमन है. ठीक है, एक फैक्टर कॉमन है जो तीनों में होना चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है. देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ these line segments. So let the factor be x. Let the common factor, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन फैक्टर बी x. ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? x मान. नाउ 5x, अब क्या हो गया मेरा? 5x प्लस 7x. अब a पार्ट मेरा क्या हो गया? 5x हो गया. b पार्ट मेरा क्या हो गया? 7x हो गया. c पार्ट क्या हो गया? 3x. ठीक है, क्योंकि x सब में कॉमन है और वो सबका फैक्टर भी है, कॉमन फैक्टर है. तो नाउ इन तीनों का सम कितना है? 45. तीनों का सम कितना है? 45. नाउ अब देखो इसको सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. कितनी आएगी वैल्यू ऑफ x? दिस इज योर 12 and 3, 15x. 15x is equals to 45, and the value of x is 45 upon 15, which is equals to how much? Which is equals to 3. 1 ja 3 ja. So x is equals to 3. X is equals to how much? X is equals to 3. Now we can easily say 5x is your a is your 5x, which is equals to, and b is your 7x, c is your 3x. Now you can find out the value of ABC. A is your 5 into 3 है ना? 5 into 3,
and 7x means 7 into 3, and this is 3 into 3. Now finally, the value of A is your 15 centimeter, B is your 21 centimeter, and C is your 9 centimeter. Okay, good. Now in order to cross check, just add these three values. What I will get? 10, 115, 1, and this is your 4, 45 centimeter. So my answer is absolutely correct. I hope you all have understood it. Anybody have any doubt? Now let's move to the next question. Okay. So in this, two numbers are in a ratio 3:7. If 4 is added to each of them, then the ratio become 1:2. Find the numbers. Okay, such questions we have done in your simple equation also. So try this first. Let's see how to solve it. Two numbers are in a ratio 3:7. 3:7. अब जब भी 3:7 की बात होगी, जरूर इनमें एक कॉमन फैक्टर होगा. So let the common factor बी एक्स. ठीक है, ये जो हम x लेते हैं ना, ये इनका कॉमन फैक्टर होता है बीच में. सो नाउ इफ, अब ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे? द नंबर्स विल बी, ठीक है, द नंबर्स विल बी, नाउ देन नंबर्स विल बी, अब आपके दो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 3x एंड 7x. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना, ये बात समझनी है कि ये 3x प्लस 7x कैसे है. ठीक है, नाउ इफ 4 इज एडेड, अब किस में ऐड होगा 4? 3x और 7x. और 3x, अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? 3x रेशियो 7x. नाउ 4 इज एडेड, कितना ऐड हो रहा है? 4 प्लस 4 प्लस 4. तो इनका रेशियो चेंज होके क्या हो जा रहा है? 1:2. रेशियो बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन इन जो नंबर्स हैं इनमें एक कॉमन फैक्टर है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट एज x. ठीक है, अब नाउ सॉल्व इट फॉर x. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2. 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. नाउ दिस इज योर 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 4. ओके, नाउ सेपरेट द वेरिएबल याद है आपको? एसटीवी करेंगे तो ये 7x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 7x is equals to 4 minus 8. Now this is your minus x is equals to minus 4. Minus x is equals to minus 4. ये minus minus cancel out हो जाएंगे, and finally what you will get? You will get value of x. X is equals to 4. अब देखो x 4 आ गया. Now I can write numbers are, जो numbers we are finding, they are 3x. Okay, let me write. ये आपके numbers हैं. नंबर्स कौन कौन से हैं? एक आपका था 3x और एक आपका था 7x. सो 3x क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4. x की वैल्यू क्या है? 4. यहाँ 7 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू, अब फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? 12 एंड 28. तो दीज टू वर द नंबर. ये दोनों वो नंबर थे. अब क्रॉस चेक करना है. ठीक है,
एवरी टाइम यू शुड क्रॉस चेक कि कैसे हुआ। उसके लिए क्या करेंगे हम, दोनों नंबर आ गए, अब इन दोनों नंबर को जब आप +4 करेंगे, +4 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 32। अब ये देखो इनका रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। इसका मतलब आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। अंडरस्टूड? And here is the next question. Two numbers are in the ratio 4:5. If 7 is subtracted from each of them, then the ratio becomes 3:4. Very similar question. You have 3 minutes to solve it. In this, again, this question is very similar. Take x be a common factor between these two numbers. So let the common factor, be x. ठीक है, ये कॉमन फैक्टर होता है ना कि रेशियो। टेक इट एज फैक्टर, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो दोनों गिवन नंबर्स जो रेशियो में है 4:5 में, उसमें कॉमन हो। सो नाउ द देन numbers are the numbers would be, क्या होंगे मेरे, एक होगा आपका 4x एंड नेक्स्ट इज योर 5x, 4x and 5x. Now if 7 is subtracted from each of them, अब ये रेशियो में कैसे दिखेंगे, दे लुक्स लाइक दिस, 4x upon 5x. Now what I have to subtract, I have to subtract 7 from both of them. दोनों से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7. नाउ दे बिकम द न्यू रेशियो, इनका नया रेशियो क्या बन गया, 3:4. नाउ सॉल्व फॉर x, सिंपल, क्या करेंगे, अगेन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड द इक्वेशन विल बिकम 4x minus 7 is equals to 3, 5x minus 7. 5x minus 7. Now this is your 16x. 16x minus 28 is equals to 15x minus 21. Now separate the variable. Separate the variable STV. Again 15 यहाँ जाएगा और 28 यहाँ. So the equation will become 16x minus 15x, क्योंकि subtract हो जाएगा यहाँ पे आके, and minus 21 plus 28. ठीक है, this will become 1x and this will become 7. तो value of x is now 7. कितनी आ गई, find the numbers अब मेरे क्या थे, numbers मेरे कौन कौन से थे, first one is 4x and second one is 5x. 4x means 4 into 3, 4 into 7 and 5 into 7, which is equals to how much, this is your 28. The first number is 28 and the next number is the another number is your 35. So these are the numbers that we have to find. क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक क्या है, बिकम 3:4. अगर इसमें हम 7 ऐड करते हैं, लेट्स क्रॉस चेक. देखो क्रॉस चेक की हैबिट डाल लो कि 28 माइनस 7 करना है, 28 माइनस 7 अपॉन 35 minus 7. So 28 minus 7 is how much? 21. And 35 minus 7 is your 28. Now your ratio is 3.
This ratio is minus 24, 7 3 जा and 7 4 जा. कितना आ गया मेरा? 3:4. ठीक है, 3:4. जब आप क्रॉस चेक करना सीख जाएंगे देन यू विल बी श्योर कि मेरा सॉल्यूशन एकदम सही. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What number must be added to each term of the ratio 7:5 so that the ratio become 5:7? Now in this you have to find out the term. ठीक है, ये कोई नंबर्स नहीं है, दे आर जस्ट द रेशियो. So there is no hidden common factor. So according to this, try to solve it. How to solve it? A very simple process that we have to follow. The ratio, एक चीज जो ध्यान देनी है, अगर ये रेशियो दिया हुआ देन देयर इज नो कॉमन फैक्टर है. ये बात अच्छे से समझ लो. तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मस्ट बी एडेड. तो लेट्स सी, the ratio is your 7:5. So what number should be added? What number should be added? What number should be added each term so that the ratio become the number that should be added must be same. ठीक है, so let's say x be the number, to add. Now the ratio become 5:4. This is the question that is given, and we have converted the word problem into equation. Now it's become simple to solve for x. Cross multiply. What you will get? You will get 7 4 7 plus x is equals to 5 plus x. This is your 28 plus 4x. 28 plus 4x is equals to 25 plus 5x. Now do the STV, separate the variable. What you will get? 4x minus 5x is equals to 25 minus 20. So this is your minus 1x or minus x is equals to minus 3. So these negative terms will cancel out. What you will remain with? The value of x. And the value of x is how much? Value of x is equals to 3. So the answer is 3 must be subtracted ठीक है, 3 must be subtracted from each term. ठीक है. So this is your statement and this is your solution. 3 is your proper. I hope it is understood by everyone. Good. Chalo. Shall I move to the next one? Okay. So here is the next question. The age of A and B are in a ratio. Now this question is also very good. The age of A and B are in a ratio 3:5. 8 year hence, मतलब यहां से 8 year बाद, 8 year hence their age will be in the ratio 5:7. Find the present age. ठीक है. Now this question is very similar to the first one that we have done, and I hope you all can do it. So do it fast and send to me. So
ए एंड बी आर टू पर्सन, उनकी प्रेजेंट एज, ठीक है, आर दे देयर एज, मतलब जो अभी की एज है किस रेशियो में है, 3:5, ठीक है। 8 ईयर हेंस, मतलब 8 ईयर यहां से ऐड करना पड़ेगा कितना, 8, क्यों, क्योंकि यहां से आज कोई अगर 1 साल का है तो 8 साल बाद वो 9 साल का हो जाएगा। दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज, वही हमें फाइंड आउट करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी बी 3x, क्या क्या है, 3x ए की, एंड 5x, कितना, 5x, अभी भी देखो दे आर इन अ 3:5, बी 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये ए की एज है और ये बी की, ठीक है। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी, अभी क्या है एज, 3x/5x, लेकिन आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर हेंस, मतलब यहां से 8 साल बाद, प्लस क्या करेंगे, +8, the ratio become, the ratio become 5:7, 5:7, बस। If you are able to convert this word problem into this equation, then this question become very simple. अब क्या, as क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, दिस इज योर 7, 3x plus 8 is equals to 5, 5x plus 8, है ना। Now solve for x, this will become 21x plus 20, this is your 56, is equals to 25x plus 40, okay। Now separate the variable, STV करेंगे, STV means this is your 21x minus 25x is equals to 40 minus 56, and 21x ये बच गया हमारा 4x is equals to how much, 16, और -4x और ये -16, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, what you will remain with, 4x is equals to 4x is equals to 16, and the value of x is 16 upon 4, which is equals to how much, which is equals to 4. So finally the value of x is equals to 4, ये बात हमें मिल गई। Now we can say the present age of a and b, क्या लिख सकते हैं हम, present age of a and b, क्या रेशियो था इनका, ये था 3x और ये था 5x, x की वैल्यू हमें मिल गई है दैट इज 4, तो 3 into 4 is equals to 12, and 5 into 4 is equals to how much, 20, ठीक है। So 12 and 20 years, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, we will cross check, ठीक है। what we will do, we will have a cross check कि भाई अगर 12 है, 12 रेशियो 12/20 है, ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज, देखो रेशियो अभी भी करोगे तो 3:5 आएगा, 4 3 जा 4 5 जा। नाउ इसमें 8 ईयर्स बाद,
8 ईयर्स बाद ये कितना हो जाएगा 20:28, 20:28। तो क्या हो रहा है देखो, 4 5 जा एंड 4 7 जा, तो क्या रेशियो बन रहा है? सो आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड। हम्म, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ ट्राई दिस। In such questions, you have, let me solve it for you. क्या दिया? First, we will find what is given and what is asked. X ratio y means x upon y is equals to 3/5. ठीक है? Now, you have to find out the value of 2x plus 3y, 2x plus 3y upon 5x plus 7y. Now, in this type of question, if x upon y is 3, then the value of x is 3 and the value of y is 5. Okay, put these value in this equation. What you will get? What you will get? 2, this is your 2. And the value of x is how much? X is your 3. So 2 into 3 plus 3. Y क्या है? Y is your 5 into 5 upon 5x means 5 into 3 plus 7. 7 multiply with the value of y is 5. Now it's simple. You can find out the final value. 2 into 3, 6 plus 3 into 5, 15 upon 5 into 3, 15 plus 7 into 5, 35, which is equals to 21. This is your 21 ratio. ये कितना हो जाएगा? This is your 50. So final value is 21 upon 50, or you can write it as 21 ratio, both are same. Understood? कैसे करना है इसको? बहुत ही सिंपल है. Okay, very good. So let's move to the next question. Now, this is the question, you have to find out the value of a ratio b. वहां पर x ratio y दिया हुआ था और हमें कुछ इस तरह की वैल्यू निकालनी थी. Now the value is given in this form and you have to find out the value of a and b. Okay, can you do it? कर सकते हैं आप? Okay, let's try. करो एक बार. Such question, the processes remain same. ठीक है, process वही रहेगा. देखो, 3a plus 2b upon 2a plus 5b is equals to 12 upon 19. ठीक है, and 12 upon 19 is a standard ratio. ठीक है, so there is no need to simplify it. So now cross multiply, do the cross multiplication. What you will get? 3a 19 into 3a 2b is equals to 12a, 12 into 2a plus 5b. Okay, now solve it. 19 3 ja, 19 3 ja is 57. 57a plus 38b is equals to 24a plus 60b. How much? 60b. 60b. Now separate the variables, means a को एक तरफ ले आओ और b को एक तरफ. So 57a minus 24a
is equals to 60b minus 38. Now 24, this will become 3 and 3, 33a. 33a is equals to how much? 22. Very good. 22b. Now what I have to calculate a ratio b. Okay. So a ratio b is 33. अब यहां पर अगर मैं a लिखूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? 22b अपॉन 33. अब इस b को भी मुझे यहां ले आना है. So it will become a ratio b is equals to 22 by 33, which is equals to 11 2 ja and 11 3 ja. So finally what I have got, a ratio b is equals to 2 upon 3. Okay, if it is, then a ratio b is equals to 2 ratio 3 is my final answer. Okay, understood? So that's it for today. Thanks for your presence. Thanks for your participation. Have a nice day. Thank you.